21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड का मुख्य उद्देश्य ग्रीन इकोनॉमी, रोजगार को लेकर इकोलॉजी और इकोनॉमी के द्वारा राज्य का समुचित विकास करना है। Uttarakhand is a major investment destination, and reflecting that fact was a massive global investor summit held in the capital, Dehradun. More than 8,000 investors, business and government representatives attended the event. The state, with remote villages and inaccessible mountainous regions, is taking new flight. The mountains of Uttarakhand are calling out to visitors, but now they're no longer strangers or difficult to reach. There is now a framework in place that will take a peaceful Uttarakhand towards a prosperous Uttarakhand. From peace to prosperity, when Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami focused on this thought to redefine development in Uttarakhand, his ideas were not limited to just the state or the country. He travelled the whole length and breadth of India and across the world as well. He won the trust of investors and raised many resources for Uttarakhand. Chief Minister Dhami was successful in signing MOUs worth Rs 27,975 crore. For that, he travelled from Dubai to Britain and did road shows. Road shows were also done in Delhi, Chennai, Bengaluru, Ahmedabad and Mumbai. These resulted in MOUs worth Rs 95,525 crore. Of the commitments to invest, Rs 27,476 crore were earmarked for Rudrapur. Rs 37,820 crores are for investment in Haridwar. There are many challenges before Uttarakhand and its Chief Minister Pushkar Singh Dhami. They have to maintain a balance between development and the environment. The mountains that define Uttarakhand, that are the pride and joy of the state, are part of the great Himalayan range and must be treated with great care. We saw one result of this in Silkyara, where the tunnel being built under the Char Dham project collapsed and 41 workers were stranded for 22 days. Their rescue operation is a success story in itself, whose hero was Chief Minister Dhami himself. He personally led the operation and remained there until the workers were rescued. उत्तरकाशी में टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत सभी का विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। A big speciality of Uttarakhand is that the workers here are very hardworking. Cheap labor is easily available. There are no labor disputes in the state, and the government is working on a war footing to provide better connectivity. Uttarakhand is a state about which it has been said that its water and its youth are of no use to the state. But that is now changing. The government has recently created 27 new policies and amendments have been made to the old MSME policy. Many sectors are covered by an umbrella policy to provide ease of doing business. Many significant sector-specific policies have been put into place based on suggestions received from entrepreneurs and investors. Uttarakhand Cabinet Minister Saurabh Bahuguna talked about turning investors into partners to help solve serious issues like migration and unemployment. देखिए, उत्तराखंड के लिए बहुत ही आज सुखद दिन है, क्योंकि 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग उत्तराखंड में अगर हुई और 2.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं, तो बहुत बड़ी एक रकम धरातल पर उतारने के लिए ग्राउंडिंग की बात करी गई है। 44,000 करोड़ रुपये। हमारा प्रदेश जो है कहीं ना कहीं जो पर्वतीय ज़िले हैं उसमें पलायन का दर झेल रहा है, बेरोज़गारी का दर झेल रहा है, उसको कहीं ना कहीं रोक लगेगी। और चाहे ये जिस भी फील्ड में इन्वेस्टमेंट हुआ हो,
चाहे टूरिज़्म में हुआ हो, चाहे एग्रीकल्चर में हुआ हो, हॉर्टिकल्चर में हुआ हो, अलाइड सेक्टर्स में हुआ हो, इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से हुआ हो, या वेलनेस स्पास और हॉस्पिटल्स के मेडिकल केयर में हुआ हो। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट धरातल पर उतरता है तो वो अपने साथ रोज़गार भी लाता है, वो अपने साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी लाता है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि 44,000 करोड़ जब धरातल पर उतरेगा तो उत्तराखंड के युवाओं को, उत्तराखंड की हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को रोज़गार से भी जोड़ा जाएगा, और कहीं ना कहीं जो पहाड़ में पलायन का दर्द है वो भी कहीं ना कहीं दूर होगा। Tourism is the main base of Uttarakhand's economy and also the main source of employment generation. Tourism contributes more than 15% of the state's gross domestic product. The number of tourists visiting the state has increased by 12% in the last 10 years. There is a lot of potential in yoga, wellness, heli-tourism and adventure tourism in Uttarakhand. Not for nothing is Uttarakhand known as Devabhoomi, the abode of the gods. Kedarnath and Badrinath are famous pilgrimage sites already. Now Adi Kailash and Om Parvat are also being developed as the abode of Lord Shiva, and arrangements are being made so that Mount Kailash and Mansarovar can be visited from Uttarakhand. There is also a future plan to create a total animal kingdom in Sitabani Corbett. टूरिज़्म उत्तराखंड का ब्रेड एंड बटर है और यहाँ निश्चित रूप में जो निवेशक आए हैं बड़े उत्साहित हैं। हमने सारी संभावनाएं जो बताई हैं, क्या क्या हम आगे भविष्य में करने जा रहे हैं। टोटल एनिमल किंगडम के बारे में हमने बताया और स्टार गेजिंग के बारे में बताया। बहुत से संभावनाएं जो हमारे हैं, केदारनाथ में से रोपवे बनेगा, हेमकुंड साहब में रोपवे बनेगा, यमुनोत्री में रोपवे बनेगा, सारी बातें रखी हैं। लोग बड़े उत्साहित हैं और 33,000 करोड़ के जो है इसमें इन्वेस्टमेंट हो चुका है और 122 कंपनियों ने इच्छा जताई है और MOU साइन हो गए। The gift of beauty that nature has bestowed upon Uttarakhand has immense possibilities not only for tourism but also for pilgrimages. Uttarakhand usually sees a footfall of about 3 to 4 crore tourists. A large part of these tourists are devotees visiting the Char Dham and other religious places. The economy of the surrounding districts such as Rudraprayag, Chamoli and Uttarkashi depends on the pilgrims coming on a Char Dham Yatra or a pilgrimage of the 4 holy sites of Yamunotri, Gangotri, Kedarnath and Badrinath. With this in mind, the government has given tourism the status of an industry in the state. Investors have shown great interest in this sector. The government has received proposals on different aspects and kinds of tourism, which also include aerotourism and astrotourism. देखिए, टूरिज़्म एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है अगर उत्तराखंड की इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। और टूरिज़्म में अब तक हम बात करते थे, हमेशा रिलीजियस टूरिज़्म हमारा डोमिनेंट फीचर है हमारे टूरिज़्म प्रोफाइल में। लेकिन इस इन्वेस्टर समिट और इसके सापेक्ष में जो हमारे पास प्रपोजल्स आए हैं, तो टूरिज़्म सेक्टर में जो अलग अलग डायमेंशंस है, जैसे एरो टूरिज़्म है, एस्ट्रो टूरिज़्म है, इस वाले सेक्टर में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स आए हैं। आतिथि तक अगर हम बात करें ग्राउंडिंग की, तो जिन्होंने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से जो एप्लीकेशन किया है फॉर लैंड परचेज़ के लिए और फॉर अदर अप्रूवल्स के लिए, उस संख्या ही उन प्रोजेक्ट्स की है 205 और उसका टोटल इन्वेस्टमेंट का जो आउटले आ रहा है 1,495 करोड़ है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में। देखिए, अगर टिहरी झील की अगर बात करें तो पिछले सप्ताह ही हमने इंटरनेशनल एक्रोबेटिक फेस्टिवल किया था, जिसमें 27 देशों के ऑलमोस्ट 60 के आसपास के पायलट्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो टिहरी को हम नया पैराग्लाइडिंग सिटी के रूप में इसको डेवलप करना चाह रहे हैं और उसके रूप में हमारे प्रयास हमने शुरू कर दिए हैं। और इको टूरिज़्म की भी काफ़ी संभावना है, तो अलग अलग पॉकेट्स में एक अच्छा प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए हमारे प्रयास शुरू हैं। While the government is taking steps to give a new direction to tourism, the investors too are showing eagerness. Those who have already invested in the sector share their experiences. Together with the government, we put destinations on the map. Today I met a lot of people who are as invested as us into this beautiful state. Whether it's building heli-tourism, whether it is getting more tourists in, whether it is building infrastructure, and together we can grow this beautiful state as the potential is huge. Whether it's the Ayush scheme, whether it is the Udan scheme, the heli services, as well as the MSNE scheme and the subsidy the government very generously gives us. Together we can make the state far more prosperous than what it is today. To attract tourists, the natural beauty of the state isn't enough. Security too is a big aspect. The government's continuous effort is to ensure no visitor to the state ever has to face a law and order issue.
Uttarakhand has also received the title of the safest state for solo women travellers. Ramashish Ray, the founder of Starscape, has an observatory in Kausani, Bageshwar district, which is used for astrotourism. We carry back everything, we don't leave anything. It is as untouched. Chief Minister Pushkar Singh Dhami said that during the Global Investor Summit, agreements have been reached on investments worth rupees lakh crore in the energy sector. With this investment, the state will progress in the energy sector. He directed the Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited to energy production beyond the targeted 2200 megawatt by 2030. He said the power needs of industries in the state will have to be addressed by existing and new electricity projects. Due to the ongoing work by the Uttarakhand government, the Haridwar cluster is developing rapidly, which is attracting investors from all over the world to Haridwar. The integrated industrial estate, built over 2,038 acres, has become a new home for global companies across multiple sectors such as automobile, pharma, food processing and cosmetics. उत्तराखंड ने अपनी एक नई पहचान स्थापित की है। अब उत्तराखंड को गुड गवर्नेंस एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ के लिए भी जाना जाता है। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सपने हमने देखे थे, वो सपने भी धीरे धीरे सच होते हुए नजर आ रहे हैं। Due to its geographic location and natural environment, Uttarakhand is the best source of solar energy. With supportive policies in this sector, adequate land and the 2-day Global Investor Summit, Uttarakhand will soon achieve its goal of becoming a global hub of solar energy. When compared with other states, solar energy production in Uttarakhand is considered to be the best. Uttarakhand is ready to meet the increasing energy needs of the country and the world in the coming times. With the completion of the economic corridor between Delhi and Dehradun, in the coming days, the distance between the two cities will be covered in just 2.5 hours. Being the closest capital city to Delhi, NCR offers definitive benefits to the Uttarakhand. The state's superior law and order situation and its peaceful environment are most favorable for investors. While connectivity has improved after the construction of the Char Dham all-weather road in the state, there is also unprecedented work being done for air connectivity. With the completion of the Rishikesh-Karan-Prayag New Line Railway project, connectivity in the hilly areas of Uttarakhand will be further improved. Additional Chief Secretary Anand Vardhan said that the government has simplified the rules for land acquisition. Uttarakhand has 71% forest area. There are unlimited possibilities for forest-based projects. From ecotourism and forest produce to herbs and aromatic plants, the investors are showing interest. Apart from this, investors are also showing interest in the fields of yoga, tourism, Ayurveda, and a capital investment of rupees 3 lakh crore has been proposed. The Uttarakhand Forest Department has signed an MOU worth rupees 1,000 crore. Apart from this, an agreement has been signed with Renew Power Synergy Private Limited of Gurugram. The state is also preparing to enter the carbon financing sector. मुख्य रूप से उत्तराखंड में अगर हम फॉरेस्ट और वन्य जीवों की अगर बात करते हैं, यहाँ पे 71% से ज़्यादा वन क्षेत्र यहाँ पे है। यहाँ पे उसके साथ साथ जो हमारे वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म है, टाइगर टूरिज़्म है, उसके साथ मेडिसिनल प्लांट्स के जो हमारे एक बहुत बड़ी रिपोजिटरी यहाँ पे है। मुख्य रूप से जो स्थानीय लोग हैं, एक हमारे पास ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो पूरे भारतवर्ष में किसी के पास नहीं है। एक जो वन पंचायत है यहाँ की, एक कम्युनिटी बेस्ड हमारी फॉरेस्ट मैनेजमेंट की इंस्टीट्यूशन है। साथ ही में इसमें महिलाओं को
50% की सहभागिता का जो है यहाँ पे इनका एक आरक्षण भी है यहाँ पे, क्योंकि उत्तराखंड और महिलाओं का आर्थिक सुदृढ़ीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वन पंचायतें यहाँ निभा रहे हैं। वन प्रबंधन में वन पंचायतों की महिलाओं के साथ साथ जो बाकी क्षेत्र है हमारे, जिसमें योग है, एडवेंचर टूरिज़्म है, इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र है जो बर्डिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभरते आ रहे हैं। बर्ड ट्रेल्स आइडेंटिफाई की गई है बहुत जगह पे। यहाँ पे नैनीताल के साथ साथ हमारे जो सिंचाई विभाग के तालाब है, जो हमारे बहुत डैम्स अच्छे, वहाँ पे प्रवासी पक्षियों की बड़ी आमद होती है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा ऐसा स्कोप है जहाँ पे जो हमारा इन्वेस्टर्स है वो आकर्षित हो रहे हैं। वर्तमान में यहाँ पे आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अवसर पर उत्तराखंड वन विभाग द्वारा 1000 करोड़ के हमारे कार्बन जो क्षेत्र है, कार्बन फाइनेंसिंग, उसमें MOU हुए हैं। एक पहल है, अच्छी पहल है। आने वाले समय में जो है ऐसी और गतिविधियां हमको देखने को मिलेगी। Regarding the Global Investors Summit, Chief Minister Pushkar Singh Dhami has ordered that the grounding for the maximum possible proposals be completed by February 15. He said that Uttarakhand government's aim is to provide employment to the youth of the state by striking a balance between ecology and economy. उत्तराखंड में किया गया निवेश सुरक्षित हाथों में है और हम आप सभी को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में निवेश करने पर आपको किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आधुनिक कनेक्टिविटी जीवन तो आसान बना ही रही है, ये बिजनेस को भी आसान बना रही है। इससे खेती हो या फिर टूरिज्म, हर सेक्टर के लिए नई संभावनाएं खुल रही हैं। लॉजिस्टिक्स हो, स्टोरेज हो, टूर ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी हो, इसके लिए यहां नए रास्ते बन रहे हैं। और ये हर नया रास्ता हर इन्वेस्टर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। The Global Investors Summit saw the signing of 1,779 MOUs worth rupees 3.56 lakh crores. Of these, 157 MOUs worth rupees 1.03 lakh crore are in the energy sector. 658 MOUs worth rupees 78,000 crore are related to industry. The tourism sector has seen 437 MOUs worth rupees 47,646 crore. 175 MOUs worth rupees 19,260 crore come in for the horticulture and food processing department. 62 MOUs of rupees 41,947 crore are for housing and urban development. 39 MOUs worth rupees 25,785 crore are in the health and environment sector, and 77 MOUs worth rupees 17,085 crore are in the field of Ayush and wellness. You cannot think of another place that is so diverse and divine at the same time. It's a place where one can come to experience the environment, to enjoy healing at various levels of the body, of the mind, and of the soul. And I think the strength of our country and the strength of our people lies in their spirituality and lies in their closeness to nature. मेरा ये अटूट विश्वास है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड के विकास, ये जो समिट हो रहा है, ये विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले वर्षों में इस सम्मेलन के दौरान किए गए MOUs के क्रियान्वयन के पश्चात राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न व्यवसायों में अपार संभावनाएं सृजित होंगी। Apart from this, the Uttarakhand Society for Promotion of Investment, Startup and Entrepreneurship is being formed for the convenience of investors. Through this Global Investors Summit, Uttarakhand is going to register its strong presence in many important sectors and also write a story of success in many areas. Uttarakhand is a state rich in resources. This is the reason investors see the state as a land of abundant possibilities. It is now the responsibility and aim of state government
to maintain the balance between environment and development.